A very good morning to one and all. Today I, Agrim Verma from the Department of Commerce and Management, extend a warm welcome to our guests for the day, Mr. Ranjeev Kumar Bahuja and Mr. Mahendra Khurana, Honorable President Dr. Anirudh Joshi, respected Principal Dr. Rajesh Sharma, faculty members and dear students to the interactive session with alumni, startup founders and co-founders organized by Institution Innovation Council in collaboration with National Service Scheme, NSS, and XD College Alumni Association, Chandigarh, that on the occasion of National Startup Day. There has been a real boom over the last decade and a half, with thousands of startups entering the fray amid increasing global investor interest for the Indian economy. And in today's date, Indian startups look ahead to solve the problems of the future, whether it is mitigating the climate change, making agriculture smart, or enabling financial inclusion. Prime Minister Shri Narendra Modi declared 16th January, that is today, as National Startup Day last year in the year 2022 to commemorate the founding and the vision of Startup India initiative to develop India into a country of job creators rather than job seekers. And today, on the occasion of second commemoration of the National Startup Day, this session is an effort in the direction of spreading awareness towards the growing business sector, as well as equipping the younger generation towards making entrepreneurship their primary career option. Mr. Ranjeev Kumar Bahuja, who is presently the founder director of the Berkeley Group, he also happens to be an alumnus of the college and is a B.Com Honors 1986 batch pass out. And not only this, he has also been the past president for SD College Alumni Association, Chandigarh. And Mr. Mahendra Khurana, who is presently the managing director for the Sundar Group, which includes Sundar Jewelers, Sundar Sterling, and Sundar Emporium. He also happens to be an alumnus of the college and is a B.Com Honors 1988 batch pass out. And on this occasion, it is our privilege to have you both amongst us today, sir. And with this, I invite Dr. Jyoti Joshi to come forward and welcome the guest. Good morning, everyone. Respected Dr. Anirudh Joshi, President, GGDSD College Society. Respected Dr. Rajesh Sharma, Principal, GGDSD College. Respected guests of the day, Mr. Ranjeev Kumar Bahuja, Founder Director, Berkeley Group, and Mr. Mahendra Khurana, Managing Director, Sundar Group. My dear colleagues and dear students, I welcome you all on behalf of IIC in this interactive session with our esteemed alumni on the occasion of National Startup Day, with an aim of motivating the youth of today to become the entrepreneurs of tomorrow. I'm really thankful to all of the dignitaries who spare their precious time from their busy schedule to share their experiences and further motivate our students towards entrepreneurship. I hope the students will get maximum benefit out of this session. Thank you. Thank you, ma'am. And I request Dr. Madhu Sharma, Registrar of the college, to please come forward and have a seat with us on the dais, ma'am. Thank you, ma'am. I now request Dr. Anirudh Joshi to please come forward and welcome our guests for the day and also share his welcome address. Yeah, mais que eu fico estava cara. Esteemed Principal Dr. Rajesh Sharma, Honorable guests Shri Ranjeev Kumar Bahuja, Shri Mahendra Khurana, distinguished alumni of this college, Madam Madhu Sharma, Vice Principal from Registrar and Organizer
organizers of the function. अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक नया विचार, एक नई सोच, एक नया आइडिया दुनिया बदल देता है। जे.आर.डी. टाटा, जब उन्होंने टाटा स्टील शुरू किया तो अपना आइडिया लेकर के जो भी गवर्नर जनरल था उसके पास गए कि मैं स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। गवर्नर जनरल ने कहा आई सेंड इट टू माय गवर्नमेंट इन लंदन। द गवर्नमेंट इन लंदन straight away rejected the idea. They said this will not work. Idea was part of Bihar, part of Jharkhand, that was not there Jharkhand at that time, part of Bengal near Asansol and Baranpur. There's a iron ore minings going on. Tata wanted to make it to a steel. The idea was rejected. Tata went to Mahatma Gandhi. बापू मैंने ये करना है। महात्मा गांधी ने एक अपील इस देश के लोगों के नाम जारी की। ये काम करने का आइडिया है, स्वदेशी बनाने का आइडिया है। हर आदमी जितने पैसे अपनी जेब में से निकाल सकता है वो टाटा की झोली में डाल। आज टाटा कहाँ है? एक विचार ने दुनिया बदल दी। छोटी सी चीज लेकर जब हमारे साथी जहूजा साहब यहाँ पढ़ते थे 86 में, उन्हें नहीं पता था कि एक दिन आएगा इस शहर का हर बच्चा बर्कले ग्रुप को जानता। खुराना जी को नहीं पता था कि रोज उनके अखबार की ऐड फ्रंट पेज पे छपे। आप जब कोई स्वप्न लेते हो, when you dream, make it a reality, but make it an idea. You must dream also. बिना सपने लिए यहाँ ये संसार नहीं। अब धीरू भाई अंबानी का नाम सुना आपने? का मुकेश अंबानी के पिताजी एक छोटे से गांव में रहते थे। बिजनेस शुरू करना है, बड़ियों का गांव था, अमीर लोग थे। अंबानी साहब ने उनको कहा मुझे आपसे पैसे लेने हैं, उधार लेने हैं, मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, आपके शेयर है, मैं आपको दुगना करके पैसा। गांव के हर बंदे में पैसा दे, बड़िए अक्सर अमीर होते, ठीक है ना। तो उन्होंने आज अंबानी का साम्राज्य खड़ा। कैसे संसार बदल सकता है, हमें खुशी है। स्टार्टअप हम क्यों चालू कर रहे हैं? हमारी सरकार ने ये क्यों सोचा? एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से शुरू होके एंटरप्रेन्योर बन जाए बंदा, ये क्यों सोचा? किसी विचार की, नए विचार की मौत उसके बचपन में ना हो जाए, वो विचार कल्प वृक्ष बन जाए। इसलिए उसको पैसों की जरूरत है, उसे दिशा निर्देश की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, एक सुपरविजन की जरूरत है जो सरकार प्रोवाइड करना चाहिए। आप अपना विचार, नया विचार लेके निकलिए, पैसे आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, जमाना बदल जाएगा।
हमारे दो स्नातक जिन्होंने जमाना बदल दिया है आपके सामने और बैठे हैं बीच। ये वो लोग हैं, मैं अभी इनसे बात कर रहा हूं। जब हमें ये कोई खबर मिलती है कि हमारी इस संस्था का कोई पुराना स्टूडेंट बहुत ऊंचे चला गया है, उनको खुशी होती होगी, पर हमें उससे ज्यादा खुशी है। और मुझे इससे ज्यादा बड़ी खुशी है कि दे फील अटैच्ड टू दिस इंस्टीट्यूशन, आज तक इसके साथ जुड़े हुए। अभी पहूजा साहब की बेटी की शादी थी रिसेंटली, मैं और अजय दोनों शामिल हुए उसमें। सारे पुराने टीचर एसटी कॉलेज, पहूजा साहब ने अपनी बेटी की शादी में बोला। मैंने अजय से पूछा कि ये पुराने टीचर कैसे आ गए। नए वालों के उनकी एक रिश्तेदार वो लड़की हमारे अंग्रेजी में पढ़ाती है, तो कहने लगे पहूजा साहब अपने टीचर्स की बहुत इज्जत करते हैं, हर एक टीचर जिससे वो पढ़े थे उसने उनको इन्वाइट किया। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इन विचारों के लिए। सुंदर जी, आपको आप आगे बढ़िए, वक्त आपका साथ देगा, अवसर आपका हाथ थाम के आपके साथ चल पड़ेंगे। चलिए, आपको नए आइडिया देने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए मैंने विक्रम को कहा बुड्ढों को मत बुलाया करो नौजवानों के प्रोग्राम में, तो विक्रम मानता नहीं है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And your address reminds me of a statement by Richard Branson, the popular investor, author, and philanthropist. He said that a big business starts small. So there has to be that one day. And with this, sir, I also request you to please extend a green welcome to our guests for the day. Sure. ये तो पहले करना था। सर आपने स्किप कर दिया, मैंने आपकी याद दिलाया। हेलो, Thank you, Joshi sir. Thank you, Aditya, and Rohit and Jay. And with this, I also request Dr. Ajay Sharma to please come forward and share a welcome address. Respected Dr. Anuj Joshi, President GGDSC College Society, Shri Ranjit Kumar Upadhyay ji, Founder Director Livelihood Group, Shri Ravinder Khurana ji, Managing Director Sundar Jewellers, Sundar Sarni, Sundar Emporium, Raji Mehan ji, President Sadak, Tarun Suneja ji, Secretary Sadak, MS Banga ji, Treasurer from Finance Secretary and Sadak. ये सब My मेरे colleagues. regular contact रखने वाले हैं। My colleagues and dear Very proud students. of it. रोहित साहब ने एक बड़ी डिटेल में बात कर दी है, लेकिन कुछ जो कॉलेज के इनिशिएटिव्स ओवर ए पीरियड टाइम चल रहे हैं उनकी बात मैं सिर्फ करना चाहूंगा। वैसे तो ऑलमोस्ट 22 साल पहले हमने सिलेबस जब चेंज किए तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेसेस की बात करनी शुरू कर दी। आई रिमेम्बर इन 2000 हमने BBA, BCA और MSc IT, MSc बायोटेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज शुरू किए उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, IPR, पेटेंट्स के सिलेबस इंक्लूड किए। मार्केट की एक्सेप्टेंस देखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। उस समय लोग ना तो लिटरेचर थी ना इतनी बुक्स थी, लेकिन एक काम शुरू हो गया। 2008 में जाकर हमने UGC से एक इनोवेटिव प्रोग्राम लिया जिसको हमने नाम दिया था उसमें मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस।
and with a particular slogan that we want to have employers rather than the job seekers. और बाद में उसका नाम चेंज करके हमने M.Com एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस में करना पड़ा, तो यूजीसी का अपना एक नॉर्म चेंज हो गया। लगभग 8 साल पहले जब मोदी साहब ने ये स्लोगन दिया था, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, तो उस समय भी हमने प्रोग्राम शुरू किए कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। लेकिन 2018 में जाकर जब AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाए कि हमें हर कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल स्टैब्लिश करनी है, which at that time they called IIC। तो हम चंडीगढ़ में वो पहला इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने IIC स्टैब्लिश की, और 2018 probably it was the 13th Feb, I remember it correctly, कि जब हम AICTE में जाकर ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी लेके आए। तो 4 साल के अंदर आज जो रैंकिंग करते हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो IIC हमारा 3.5 स्टार स्टेटस पर आता है, और वो रैंकिंग का सिस्टम बड़ा क्वांटिटेटिव बनाया हुआ है कि आपने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए हैं, कितने ऑपरेशन सेशन करवाए हैं, और उसके मुताबिक रैंकिंग देते हैं। और चंडीगढ़ में हमारे पास वो हाईएस्ट रैंकिंग है, इवन मोर देन द व्हाट पंजाब यूनिवर्सिटीज है। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास नेचुरली ग्रांट्स भी हैं, इंक्यूबेशन सेंटर भी है, लेकिन वी हैव डन एक गुड जॉब इन दैट एरिया। इस साल का हमारा जो 2023 का जो IIC के बारे में हमारा विचार है, लास्ट गवर्निंग बॉडी में हमने ये डिसाइड किया है कि हम इंक्यूबेशन को प्रमोट करने के लिए कॉलेज में जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको भी फॉर्मली शुरू करेंगे, और उसके साथ जो रिक्वायरमेंट होती है दैट यू रिक्वायर टू गिव सम स्टार्टअप फंडिंग और सो, उसके लिए जो सेक्टर 8 की कंपनी एक्ट के अंदर एक कंपनी बनानी पड़ती है, वो भी हम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, ताकि फॉर्मली सीड फंड भी अवेलेबल हो, को वर्किंग स्पेस भी अवेलेबल हो, और प्रॉपरली इंक्यूबेशन सेंटर में चला पाए। इसके लिए हमारी बात IIT के 2 रोपड़ के साथ भी चल रही है, IIT खड़गपुर के साथ भी चल रही है, जिनके पास ऑलरेडी बड़े अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि उनके पास करोड़ों की नहीं अरबों की फंडिंग है, हमारे पास वो है नहीं, पर सर्टेनली फंडिंग सब कुछ नहीं होती, डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन डिसीजन भी होता है। और इसीलिए हम जब काफी देर से एलुमनाई एसोसिएशन के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने दूजा जी को भी और मेहन जी को भी रिक्वेस्ट की कि जरूरत ये है कि जहां हम एकेडमिक लेवल के ऊपर बच्चों को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा पाते हैं, लेकिन रियलिटी में जब तक कोई फाउंडर आके, एंटरप्रेन्योर आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करेगा, तब तक बच्चों को वो मोटिवेशन लेवल नहीं दे पाते। और ये भी सच्चाई है, थ्योरी में पढ़ाना और प्रैक्टिकली जो होता है उसको बताना, दोनों में फर्क है। तो उसी को देखते हुए कि हमें और एलुमनाई को एंगेज भी करना है, उनको बच्चों के साथ लेके भी आना है, इस हफ्ते का ये दूसरा प्रोग्राम है। पिछले में भी आपको याद होगा 2 एलुमनाई हमारे पास आए, वो भी स्टार्टअप फंडिंग वाले थे, दैट वाज ऑन 12, जबकि नेशनल यूथ डे था, उस समय भी हमने इसी हॉल में मिलकर उनसे कुछ सीखा। आज हमारे पास 2 और एलुमनाई हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किया है, अपना एक नाम बनाया है, ब्रांड बनाया है। और जैसे उस दिन मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था। आज भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि जब दोनों जो माने हुए लोग हमारे पास हैं, तो आपके मन में जो बातें हैं, जो पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। जितना इंटरेक्टिव सेशन होगा उतना ही हम सब कुछ ना कुछ सारे लोग बैठे हैं इधर। हाँ, उस दिन वाले भी हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा और थैंक्स करना चाहूंगा रंजीव जी का भी, नरेंद्र जी का भी, और एलुमनाई एसोसिएशन के और हमारे साथियों का, जो अपने कीमती समय निकालकर आज आप सबके बीच में हैं, और होपफुली वी विल बी लर्निंग अ लॉट ऑन दिस डे। थैंक यू। Thank you for sharing your words full of encouragement, sir. And also, on the note of encouragement, so Jeff Bezos, the Amazon founder and CEO, once quoted that he knew that if he failed, he wouldn't regret that. But what he would definitely regret is not trying. So now is the time that you think on the lines of putting up your ideas and thoughts into action. And to guide you all and to mentor you all, I now invite
sir to please come, the Huja sir to please come forward and interact with our students. Good morning. Dr. Joshi, Dr. Ajay, 11I, Madhuban, my colleagues or my college mates and students. First of all, I would like to thank Dr. Ajay for giving me an opportunity to be here in front of you. We are not routine speakers or anything, though we give a lot of lectures to our employees in our organizations. But those are mainly based on targets and customer satisfaction, and those are very, very targeted. This is something, so Ajay talked to me, and we also thought it's an opportunity if we can share what we know, and so only you students can tell later on, right, what we have been able to convey to you. I would like to start the thing with a very happy New Year note to all of you. So it's the first year on 15th, 16th, the first month of the new year. Happy New Year and a new beginning. I consider every day is a new beginning for us. So whenever we sleep or whenever we get up in the morning, we should have an agenda for the day and we should start our day with a new beginning. Obviously, a year is a big beginning. We all make a lot of promises to ourselves, to our friends, to our families. But as the days passes, we just forget everything. This is a routine nature. I'll just start with a small introduction. I'm Ranjit Ahuja, Bachelor of Commerce Honors, 1986. I'm an SD 11I. So we were studying here when a lot of trees were there. You children might not have seen. Out of 6-7 classes, we used to attend 2 classes in the UMT, and language and all those. You have seen those days. And there was a difference between today and that time. Like whatever we used to learn, whatever we used to remember was through our teachers only. At that time, there was no Google. Hardly any institutes were there. I remember I did my B.Com and I did after that my CA also in 1990. And during this span, I never went to any teacher for any tuition personal coaching. So Dr. Joshi was saying, so all my ex-teachers were there. They are actually a guru. I learned everything from them only. It's good of you. I still remember the first lecture from Professor Kiran. Yes, right. It was a bank reconciliation. I still remember the way he taught us in Punjabi, Hape, Sajay, and all that. With that, we still carry in our in 90 itself, I started practice as CA, but I never wanted to carry on my practice and anything. So I wanted to be an entrepreneur. Business and rather, entrepreneur is a new word. So we wanted to be in business and all that. So while working for that thing also, I just kept on working. No doubt I tried for 1 or 2 jobs where I would like to give a code. Just clearing after my B.Com, we and the CA, I was just to start off. So I came across an advertisement in the paper. There was a regional computer center at that time. If, everybody must be knowing in Sector 17, that was the first computer center of the region.
So they came out with the ad for accounts officer. So I just applied for that. So first it was a written test. I went for the test. There were 300, 400 people were there just for one seat. So they gave us a paper. It was a logical test and everything, English, logics and all that. Just wrote, it was 1 hour or 1.5 hours. We spent that time. Few days after, there was no combination. We went there, just saw the list. The 4 people were shortlisted on the written test, and I was one out of them. The post was for account manager. Like you had to have that team of 4, 5, 6 people, whatever there, but my name was there. So I appeared for interview after a few days. And to my surprise, about 16 to 20 people were sitting in the conference of that thing, and the interview started. So I never knew I want to carry on a job or whatever, but I just went in the flow, let's see. And there was a question asked on me by one of the interviewers. What do you want to be in your career? क्या बनना चाहते हो? So my spontaneous reply was कि I was want to be the hero by army. So half of them smiled and all that things. So it went off and I came back. Later on I realized I'm giving my ambition as hero by army. Why would they keep me as an account manager over there? So actually, to be a businessman or whatever is in your blood, if I can say, is something is there. But it's not, you cannot dream to be anything. We can always. In 1994, I started my first venture of Berkeley. So I would like to mention here that I'm a first general entrepreneur, businessman. My dad was a banker. Our entire family, entire khandan, they were in jobs. And I was the first one to start off this. So banking was in my blood. So I made a NBFC at that time. And started my business, like borrowed some money from here and there for NBFC and started financing two-wheelers. So that was the first venture when I started that. Before that, during this 90 to 93, we had a lot of experience. At that time, stock market was in boom. If few of you all remember Harshal at that time, that was that time. So we joined a lot of chartered accountants got together and made a stock exchange also at that time. It was called Chandigarh Stock CA Stock Exchange Association. We were in Sector 9. So we earned a lot of money there also, and we lost the money also there. So then another career path started in 94 with the NBFC. Started financing, then became channel partners for a lot of banks and everything. Then the journey went on. These are my current group and engagements, what I am doing as of date. So I am automobile dealership for Mercedes-Benz, Hyundai and Tata Motors. We are mainly in Tri-City. I've got Mercedes in Dehradun and Karnal also. We are insurance brokers, stocks and commodity broking also. So these companies are. You had what type Maruti also with you? Yeah, I got Maruti also. In 2012, I got a fight with Maruti. Okay. So that sequence might also come in between. So I got an insurance broking. Mr. Rajiv Mahan, our alumni also, he is heading that company for me. And the stock and broking company is being taken care by one of my friends. Beta commercial complex, Berkeley Square, it's in the industry area. Lot of you people might have gone to play Smash over there. So I'm just working on a housing project. Good, good.
Like we have been called here on a startup day. Like this is what we are traditional business and what we have been doing till now. So in this lockdown period, we had a lot of free time to think around and everything. So at that time, there were a lot of used car companies actually. I'm into car business now after financing and everything. I've been doing into cars. So car business is practically into my blood, you can say, at that day. And we were used car player also. I started used car business long back in 2004 as well. We're just going through what Car Echo, Car 24 and all those guys are doing. So in this lockdown period, I also started working in that. During that, sitting at home only, I made a concept, picked up a team who started working on this technology and everything. So auction is my B2B used car marketplace. It is known in the market. We've been working in this for the last 2 years. Big name has not come up. We are still, I have funded it myself only. There's a lot of seed fund and even a lot of funds that have gone into, but we are still looking for a big thing. So my plan is to go on a all India basis for this thing. But we are struggling with PCs and all this because market is just moving around. Let's see where the things go on. So this was my journey, and like Anil said, I would like now I start the things what I know in whatever way I am just going to present it. But I would request let's make it a interactive session. I would welcome if you guys can just keep on asking questions and all that. You can stop me anywhere in between. So Dr. Joshi took his name. I just make it interactive, like if you can just name who is it. So he is founder of Reliance, right? Yeah. So everyone knows. He is carrying the legacy of Tata Group. He is not a founder. GMD Tata was a founder, but just he is carrying the legacy. All these names were taken during this session. So he is a founder of Amazon. We can call him a real startup thing, like he started with the. So he is the biggest, I regard him as the biggest entrepreneur as on date. He has seen a lot. He went to sky, he fell down on earth, then again stood up. Before this Tesla, he was just bankrupt. He was again bankrupt in records as well. Then he again got up. So good. Everyone knows all these names. All they are big names, entrepreneurs, and dream of everyone. So my simple question is, out of this, all these students sitting here, who doesn't want to become one of them? Can they raise the hands? Who doesn't want to become? So no hand raised. It means everybody want to be an entrepreneur and want to have success like these people have. It's very good. Everyone is ambitious. So no one wants to go in service from here. Government job, banks. No? It's good, sir. We are from the best of the seed we can arrange. Ready to bang on. You have seen good faces, big faces, their journeys, but journey is not so cool as it appears from the faces and all that. We always try to take a graph, green chart,
going up, but there are a lot of things pulling us down as well. There's a red thing. It is our environment, our friends who become enemies in times to come. Lot of government issues. We are in India. We are not sitting in UK or US where you'll get promoted or you'll get cool stuff for everything. So we have to fight the environment. So we are into business. We and Khurana Sahab. You can ask us. Entire day we are busy in handling the situations, tackling the department and everything. Hardly doing anything about the business. If we could put our energies into the business, actual business, what we are doing, so then there is no one. So sometimes I say, I am at the wrong place. If we have been somewhere else, so I might be situation has been different. So anybody, like not anybody now, everybody wants to be entrepreneur. So we have to keep ourselves ready, like we have to face a lot of things like this. I have seen, like Joseph said, you are a multi dealer also. In business, in everywhere, you have to take a lot of calls. Risk is one of the biggest thing which comes in the definition of entrepreneur also. So any businessman who is entering into any venture is taking a big risk also, and you can fall down anytime. And you have to keep on taking calls. No doubt we take all calls, all decisions, everything is for our growth and all new ventures and everything. But sometimes decision goes bad. So I took Mercedes in 2011. 2012 I started off with those dealership. And Maruti had an agenda, they don't want their dealers to do any other competitive business. So they talked to me. So we gave them extension, everything. It went off 6, 8, 9 months. Then again they stood up. Again every day if I started off. Then we are Punjabis, hot blood, everything. We took a call, I resigned from, we were doing very good at that time. Yeah, I got about five dealerships at that time. We were selling about 1,000 cars per month at that time. So we took a call, resigned from them. We talked to other manufacturers. But with the other manufacturers took time, like Hyundai and everything, they took time and all that. So there was a time when my graph, this is just this way, that came like this. That was 2013. So from there again, we started everything. And everything was Now, going down. yeah. Okay. So this is a small decision which makes the things different. This is a रोज कहते हैं अभी सर ने बोला कि कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. So the road to be anywhere is through doing only. Something is not coming as there. So practically अगर हमें करना है कुछ, we have to just dream. I would say कि we all should think very big and dream even bigger. And उसको करने के लिए we have to start doing something. अगर हमें कहीं पहुंचना है, we cannot just rush. There is no flight, there is no bus. We just have to take small steps. No shortcut route or straight flight. You just have to take small steps. Even if you have to climb 13th floor or 12th floor or wherever, we have to go either by lift escalator or by stairs. And we cannot jump on the stairs also. That cannot be jumped on. Who can be entrepreneur? You all want to be entrepreneur? So this is my definition, what will be coming in later slides, like who can be an entrepreneur. Is there any quality or specific thing which a person needs to have to be an entrepreneur? Can anybody say? Who can be a risk taking? Dedication. Consistency. Patience, willpower. Everything is right, but one single thing cannot work upon that. It has to be a combination of everything what you all are saying. So as for me, anyone can become an entrepreneur.
So all of you can become an entrepreneur. So I can just, I'm just going to give you some points, like. I always think that it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. This is our thinking only, like I want to be this, I want to be that. Otherwise तो पहले क्या होता था कि ये गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है चलता है अपने बच्चे को भी कहीं कराना है बेटा ये ट्राई कर ले यार यहीं पे इसकी जॉब निकली है वैकेंसी निकली है जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट बट नाउ द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग पहले कुछ बच्चे सोचते थे अब जैसे अब सब लोग जितने बैठे हैं एवरीबॉडी इज थिंकिंग आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिकली वी ऑल आर ऑर्डिनरी आई एम आल्सो वन आउट ऑफ यू ओनली तब तो हमारे पास सेशन भी ऐसे करवाई नहीं गए कॉलेज में सो वी ऑल कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एंड मेक ourselves extraordinary एक्स्ट्रा भी ऑर्डिनरी के आगे ही लगाओ देन ओनली वी बिकम luck plays a role or not? It's a small question. Sometimes Yes, sir. it plays. Yes, sir. Like depend करता है. कैसे? Like you can try, but for example, some people try the same thing that other people do. They fail while the other person succeeded. So I guess luck also plays a role. So why we put everything on the luck? Why not the other things? Why don't we see what he did and what he didn't do? That can also be there. Please, ma'am. I think luck can play a role, but the entrepreneur shouldn't wait for luck to happen. Don't wait for it. माइक नहीं है विक्रम उठा के मनीष को माइक पे बताओ I believe in one thing. The more harder I work, the more luck seems to be coming to me. So this is a philosophy what history में हमारा कृष्ण जी ने गीता में बोला है कर्म करते जाओ I was talking about गीता गीता में बोला गया है कि कर्म करते जाओ बाकी चिंता मत करो So our job is just to do hard work. There are a lot of things associated with hard work, but hard work is the first and most thing. बात करते जाओ अपने आप बाकी सब कुछ आता जाता है. Everything follows. We should not be worried about anything, fame, money, or anything. Everything will follow. I put down some points here, traits of a successful entrepreneur. Entrepreneur never says, I am an entrepreneur. He just believes in hard work and is happy with success. A real entrepreneur will never go on in market and look for praise or anything. He would say, I am happy with my success. And he just keeps it from it. Any entrepreneur, successful entrepreneur is self-motivated. No doubt we need a lot of motivation, a lot of times and all that. But biggest thing is we need to have our inner self-motivation, only then you can succeed in your aim or whatever we are looking for. He does what he loves the most. Someone said an idea. आइडिया क्या होता है जो आप पसंद करते हैं अपने दिमाग में जो आप घूमता रहता है सारा दिन what you like doing and all things. If you involve yourself into that thing only and start working on that thing, nobody can stop you from that. So practically लोग कहते हैं कोई किसी ने बोल दिया बेटा ये तू कर ले ये कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला. Only thing is you just have to analyze yourself कि आपको क्या करके मजा आता है. What you enjoy the most. मैंने डीएवी कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग की थी. अब क्या लो ब्लड में बैंकिंग थी या वो था इट वाज प्री इंजीनियरिंग एंड दैट वाज द लास्ट ईयर जब एडमिशन मेरिट में मिलती थी. आई डिडंट गॉट एडमिशन बिकॉज आई हैड 0.5 या 0.25 का कुछ फर्क था. So I didn't got admission there.
Then I came to SD college. I came to SD college, joined B.Com. I started loving it. I would like to narrate one or two incidents, small point when I was doing B.Com here. तो एक तो मैं बताना चाहूंगा आज की डेट में 95, 98, 99% के बाद भी कुछ नहीं होता। मेरे B.Com में B.Com 2 में या क्या था, I got 71% and my name was in the Tribune. I was 10th in the university. The thing is कि उसमें resources और सब कुछ limited था. We used to put a lot of hard work. I don't know आज के टीचर्स पेपर कैसे चेक करते हैं, उस टाइम कैसे चेक करते थे, बस lot of differences there. And I was just talking about capture and everything. If you get into something which you like and enjoy, nobody can stop you. हमारे उस टाइम पे B.Com 2, I think statistics was a subject. So it was in papers also. उस टाइम paper leak हुए. I was just about to leave my house. घर से निकलने वाला था. I was just अपनी जो भी conveyance कर रहा उस टाइम. So someone came in. Rajiv ये paper है देख ले. Just went through that thing and ठीक है leave it here. So I knew everything what was there. Whatever he showed me, I came to this examination hall, and the question paper was exactly same what I saw it. So I went through that thing and everything, and knew I had done 100%. And when the exams were finished, the retest was declared at that time, like because that was leaked, so that was not considered again that. And people were just literally crying. Again went into that paper and everything. I got 99 marks again. This is what I mean to say, like what you like. If you involve yourself into that, that is not by chance or anything, but you have to be very, very biggest critic of yourself. Only then you can work upon and look for what you are looking for, and you have to jump into that. Any successful entrepreneur is a self-disciplined person. Discipline हम बहुत सुनते हैं, प्रिंसिपल साहब भी बोलते होंगे, घर पे बोलते हैं या डिसिप्लिन चला करो, सारा कुछ करेक्ट है. So this is not like discipline doesn't say कि we should not do this or that. We have to involve ourselves in everything. We should watch movies. We should spend time on social media. We should have party. We should do everything. But we need to divide our time, what we have to do and all that. Exercise आज की डेट में कहा जाता है, everybody knows that is also very critical. अब what is actually the meaning of discipline? Dictionary meaning बहुत है. एक meaning मैंने भी बनाया अपना. मैं have to खींच देंगे. Anybody would like to comment on this? As for me, discipline is something when we are forced or when we force ourselves to do something which we don't like to do. This is actual discipline. फौजी discipline ऐसे करो वैसे करो वो सब अलग है. अगर हमें सुबह exercise करनी है, we don't like to get up. I'm an avid golfer, regular golf खेलता हूँ. सुबह खेलता हूँ because day I don't have time. But जब सुबह 5:30-6 बजे उठना होता है, so that is the most difficult time. The moment you get up, you move out on the road, you forget everything. So this is self-discipline is the most important thing for a successful entrepreneur or anything, leave entrepreneur. It's required in our personal lives as well. This is what we have to put ourselves into, our environment also, and everyone. And successful business has a risk-taking capacity, appetite, and big patience. These are the all words which you students took. When I was just climbing up, I saw a lot of quotes written on the steps. अगर हम वही पकड़ लें तो सब successful business निकल जाओगे.
कुछ और चाहिए नहीं. We all know at the back of our mind what is required, but we forget at times. And but अगर जो मैंने पहले बोला हम self discipline के अंदर आ जाते हैं तो nobody can stop us from doing anything what we are looking for. He is self-confident and keeps on improving his personality in bits every day. We cannot climb anywhere without stepping into each step. Similarly, we cannot become a good personality, good businessman by doing everything in a single time or a single day. We have to improve ourselves in bits. एक दिन में एक छोटा चीज सोचो ये करना है मेरे को ये करना है and start achieving that. He's a leader. This is something कईयों में quality होती है कईयों में नहीं होती. There's a lot of definitions of a leader. Who is a leader? Leader is practically a person who helps his environment, his people around to become leaders practically. Delegation से शुरू होता है leadership. If I want, like मेरे जितनी companies हैं जो भी है सब मैं हर जगह बैठ के कुछ करूँ I can't do that. So I have to create leaders, motivate करके जिस तरह से करके so that you can able to delegate the thing with it. अब धीरूभाई अंबानी started his legacy. Mukesh Ambani is carrying on. Anil Ambani ने खराब कर दी. ये नहीं Anil Ambani is also good entrepreneur businessman, but he lost his track somewhere. Self discipline वाला कहीं ना कहीं otherwise तो उसमें क्या दिक्कत? अब मुकेश अंबानी what he is doing? Does he know कि उसके Reliance के store कहाँ चल रहे हैं? He doesn't know anything. Just see a paper suppose. So practically उन लोगों ने क्या किया आगे leaders बनाते गए और आगे उनको सिखाते गए कि आप leaders बनाते जाओ. Who can take the reins of your business? This is to sum up, like, this is another thing I always say, be honest to yourself. हम शीशे के सामने खड़े होते हैं सुबह रोज तैयार होते हैं ड्राइव करते हैं सबको देखते हैं we know we have a pimple here we just try to that thing कुछ छुपा लिया वो कर लिया that is something artificial but internally we know what is our strength हमारे अंदर क्या qualities है क्या disqualities है we have to work upon those. ये नहीं है कि आपको in doing business you need lot of people you need to do lot of things. I myself is a very bad negotiator. कभी भी negotiation में deal के अंदर मैं नहीं बैठता. I know my people जिसको आगे बिठाना है and all that, but I cover up that thing. I can do a business better like sitting in a room alone. I don't sit in any of my business office. किसी डीलरशिप में किसी भी कहीं उस पर नहीं बैठा है मेरा my another office जहाँ मेरी बैक ऑफिस की टीम है. I control our admin, HR, accounts and everything from there on. Just a separate office. I don't fit in any of my workplaces. I don't like interacting my customers. अगर मेरे अभी तक के कैरियर में देखो अभी मारुति and all that, I hardly have met 8 to 10 customers. वो भी बहुत extreme customer issue हो गया and all that. Otherwise, we don't meet. So I mean to say, we have to be honest to yourself. Honest means हमें अपने self analytical करके कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें. And जो अपनी weaknesses है we have to work on those weaknesses. Learn from other people's mistakes and lessons. ये हम जब से छोटे से बड़ा होना शुरू होते हैं तो हम सुनना शुरू कर देते हैं हमारे माँ बाप बोलते हैं बच्चा वो मत कर and all that. छोड़ो जी आज की डेट में जनरेशन हमारे बच्चे नहीं सुनते. So that is practically हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने किसी लेसन एक्सपीरियंस उसके साथ ही बोलते हैं. A good entrepreneur, a fast entrepreneur ये जो आज की डेट में इतनी यंग जनरेशन इतना कुछ कर रही है हम लोग मैं तो वही बोल रहा हूँ हमें ट्रेडिशनल बिजनेस है we are not a startup. तो वो जो कर रहे हैं उन लोगों की मिस्टेक्स और सब कुछ देख के ही कर रहे हैं कि they are not working on that thing. People say कि नहीं मैं तो अपने आप ट्राई करूंगा मेरे को तो खुद करके देखना है कि इससे क्या होगा. लोग कहते हैं वो भी बहुत बकवास है नहीं मैं तो खुद देखूंगा. ठीक है देखो if you have time you spend the time over there. But
This is the best thing we have to inculcate our quality. Like हम लोग दूसरों को सीख के और उसको करके, we should not go into that way. We can make our own ways. Never leave focus on hard work. Everyone says, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. Never stop learning. आज भी हम लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं. Everybody is learning. Believe in yourself and remember, I will make it. Maybe not today, but absolutely and definitely. कुछ भी आज जुड़ी नहीं आज ही हो जाए, सब कुछ हो जाए. It takes time. You need to have a lot of patience, persistence. But if you are determined, you will do that. But ये है कि dreams में सोच के बिना कुछ किए, we have to implement that and just focus, hard work and everything. So anybody can be entrepreneur and a winner. So there were hardly any questions which came through this thing. So before I conclude, yeah, please. Can you narrate your business model a little bit practical? Use the mic better. Sir, good afternoon, sir. Can you elaborate your business models a little bit practically? So how did you start it? What was the process? Basically, you're talking about the dealership. How did you contacted the company? How did you, what practical things you did to be a dealer with Mercedes? As of today, we are too aware of everything. Like even we get all this information from Google or every a lot of sections are there. We know what we can or you guys can plan what you want to do and all that. At that time, it was just a journey we started. I did my CA, started my practice, wanted to be a businessman, left practice, started business with the NBFC, got opportunity to work with a lot of NBFCs. I worked with Lord Finance, with Dayal, Accredited Bank, ICICI Bank and all this. As their associate, I used to fund on their behalf. Aap ki date mein we DSA channel and all this, wo karte rahe. And all of a sudden, one day we realized that what we are doing, we are working for other people, let's do something else. So I started my own workshop way back in 2001, I suppose. 21 साल पहले हमारे यूज कार की वर्कशॉप हमने यूज कार बिजनेस शुरू किया बकली ऑटोमोबाइल के नाम से ब्रांड से एंड मल्टी मॉडल वर्कशॉप बट टाइम वाज नॉट फेवरेबल थिंग्स वर नॉट मैनेज्ड देयर वाज नो सिस्टम ऑफ लाइक अब जीएसटी है उस टाइम सेल्स टैक्स होता था देयर वाज नो क्लियर टैक्सेशन ऑन यूज कार एंड ऑल वी गॉट लॉट ऑफ इश्यूज starting business करते ही 4-5 महीने के बाद we had got very big rate from sales tax because all these used car brokers got up against us. So चलता रहा fight चलती रही and then we thought of let's enter into dealership business. उस टाइम पे dealership business जो होता था that was for capitalist job that was not for people who want to work. उस टाइम यहाँ पे passport automobiles होता था मारुति who used to लाइन में लग के मारुति मिलती थी 70,000 की गाड़ी होती थी 80,000 प्रीमियम होता था so that was that time actually it was not easy to enter into that thing. So we got an opportunity of a small two-wheeler dealership Yamaha bikes then we got an opportunity for a Shockland commercial type of trucks वो हमने किया but I was not stopping we were just following up with these people. Then we got an opportunity. There was a General Motors, Chevrolet, अभी बंद हो चुकी है, इंडिया से जा चुकी है. We got an opportunity. Someone was selling that dealership. I didn't have money. She wanted 1.5 CR. उसने मेरे से मांगा cash में. कहाँ से लेके आते हैं? So somehow we had good relations and bankers and all that. We were able to achieve and that thing. हमने backdoor entry की उसके अंदर. We became his partner because companies were not recognizing us. इनके पास कौन सा पैसा पड़ा इतना और कुछ कहाँ से क्या दे दे. We got that opportunity. We entered into that. After working for 6 months, showing a performance, we went in front of the management. हमारा पैसा पूरा स्टेक पे आ चुका था. 1.5 करोड़ उसको दिया था 3-4 करोड़ और लग चुका था. तो we were sitting in front of management and Delhi कि हाँ जी ये this is the same. ये जो आपके सामने he is a sham. We are working now and you have to recognize us. एक दो मीटिंग में we were recognized और चलो it went off. It was a very difficult job. Like I am talking of risk, so everything was a risk.
सब इधर उधर से पकड़ा हुआ था and all that. So some friends also have that. That went through. Then again, we were not stopping. So I was fighting for Maruti. 2005, we got that. We were 3 brothers. So we distributed business among them and we got opportunity for Maruti. We did a lot of jobs. And masses also came in between. After that, so we were recognized, milta gaya recognition and all that. So there was no predefined plan at that time कि हम ये करेंगे वो करेंगे. That was just what came on the way to चलता गया. Sometimes when you don't know, you have to follow what, and you should allow what is coming on your way to happen. Anybody else? Very good afternoon, sir. I just wanted to ask, like you showed a slide and we had 5 very prominent names there. Out of them, 3 were non-Indians, right? Americans essentially. So what do you, I mean, if a parallel seminar would be conducted in USA or UK, the scenario would be they would have their own names, most probably. All of them would be their own names. So what do you think that Indian businesses or Indian startups or Indian companies lack that they are not able to go as worldwide as, say, Amazon, Apple, etc.? Actually, this is not the case actually. If you go into detail, I deliberately showed all these faces because I wanted to show the big, very big names. Like we can show our names also, like you can say Bhavesh from Ola, Oyo, even Arnal Clap. There are a lot of people, like our biggest example is from their founders of Chandigarh, Flipkart. Now there's no doubt they've exited and Walmart took over them. It's as good as what these Amazon is doing. Flipkart, that company is also doing as good as that. ऐसा नहीं है कि वो नहीं है मतलब and even if we can't say like if you go out to a seminar over there in US or UK, they won't show faces from our country. So they don't have such big names like Tata or Ambani to show. And even they have done a lot of studies on our businesses. Like there was a time when Paytm was multiplying. When ICICI started private banking, they were the first bankers who went to such a great height. They went to a lot of places to give even Howard called them for their sessions. How they are multiplying in retail and all those things. So we cannot say that's a scene. We have businessmen. And even if you go into more data, you'll find the highest number of entrepreneurs are just coming up from our country only. Startup focus is in our country. बाहर इतना ना infrastructure है, ना capacities है, उनके पास ना ही market है. We are the biggest market. You see अब US में क्या हो रहा है? कितने startups वहाँ से आ गए? 1-2 लोग आ गए, Uber आ गया वहाँ से. We have got a parallel Uber. ओला ने खड़ा कर दिया था. So we are not way behind, rather we are the leaders. Times to come, you will say कि हमारे ही entrepreneurs हैं, billionaires कहाँ से अगर आप देखो तो billionaires India is giving the biggest, most of the billionaires. Unicorns यहीं से इतने आ रहे हैं, कहाँ पे इतने unicorns हैं? So we are no less, rather we are best of all. गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच सर फॉर मोटिवेटिंग अस. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मारुति वाले डिस्प्यूट वाले इंसिडेंट से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? सबसे बड़ी लर्निंग it's a very straight and blunt question and not easy to know, but I have analyzed myself कि क्या हुआ था, क्या किया था. वही जानना है सर. हाँ वही जानना है. तो ये बहुत पुरानी एक सेइंग है. आपके बुजुर्गों ने कहा कि नहीं कि क्योंकि आपके बुजुर्ग तो हमारे जैसे ही हैं, बाकी बुजुर्गों ने कहा कि नहीं. वो कहते हैं कहीं से भी कोई पुरानी ईंट उठाने से पहले सोचना चाहिए. हमें लगता है कि मैं ईंट उठा दूंगा, ये एक दीवार लगी हुई है यहाँ पे 20 ईंटें उठाई, इसको उठा के कर दिया. एंड यू डोंट नो कि उसके नीचे कितने सारे हम उसके टर्माइट्स हैं, कीड़े हैं, जो भी वो सर्वाइविंग देयर सब कुछ है. तो उससे डिस्टर्बेंस कितनी होगी.
We took a call in heat of moment. हमने call ले ली, we are three brothers, मैंने बोला पंजाबी and all that. But later we realized मेरे पास 1500 लोग काम कर रहे थे उस टाइम. हमने जो नए वेंचर शुरू किए उसमें 1500 लोग चाहिए ही नहीं थे. उसमें we needed just 600-700 because वो ग्रोथ दोबारा नहीं थी. तो हमें 800-900 लोगों को फ्री करना पड़ा. There was not a single dispute, कोई किसी कोर्ट में नहीं गया. We paid everyone, सबके arrears दिए, सब कुछ दिया. So that was we didn't realize. So सबसे बड़ा lesson है कि before demolishing anything or doing anything, rather उसको carry करो साथ में. But you have to think a lot on before doing any such action कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ दीवार को and वो कर. I am saying फिर एक example देता हूँ. It's a very out of this thing. So जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, staying there since 2004. 15-16 साल है. We are three brothers. We were together with parents. We were staying in that. It's a 2-canal house in sector 7. That was our third or fourth house when we started that thing. सभी इकट्ठे थे. But time changed in 2018. My brother younger to me, he separated. He shifted to another house. Then I lost my father in 2019, 2020, I lost my mother. And until that time, the younger brother he was उसने ऊपर renovate कर लिया, मैंने नीचे renovate कर लिया. And when she went off, mother के जाने के बाद he said कि मैं भी जाना चाहता हूँ. Like don't, it's a part of life. रहना नहीं रहना. And he also went out. So I got two daughters, small family of 4, 2-canal house. So one way was कि आप इसमें से निकल जाओ. और it wanted renovation also. So after spending 6 months क्या करें नहीं करें, I went into a call कि मैं इसको पूरा renovate करूँगा. I sat inside. It took me 2.5 years, 2 साल लगे हैं. पूरा घर renovate किया है while sitting inside. People say why you did that? But I never wanted कि I was not liking कि मैं कहीं plot लेके जाऊँ कहीं और हूँ and all that. It's a very small example, just trying to relate that. So we are happy, we stayed there, we didn't disturb ourselves. बिल्कुल भी बाहर जाते कहीं रेंट पे मकान लेते फिर I had used to visit every day कि क्या हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा. I was sitting there. पहले first floor renovate किया, we shifted ourselves there. फिर नीचे किया. So this is the biggest thing. ये माइक जो है सर अगर आज बर्कले ग्रुप मारुति के साथ होता तो इस ग्रोथ पे होता या इससे और ऊपर होता या नीचे होता? कुछ कह नहीं सकते. मैं वही कह रहा हूँ होता नहीं होता तो वो है. मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ नहीं होता कि दुबई में होता, यूके में होता तो शायद मेरी फोटो यहाँ पे आप देख रहे होते कोई और हो रहा होता. This is something we should not put energies into all these things. कोई फायदा नहीं इस चीज का. Thank you so much. We should live in present only. One present only. Future अपने बनता रहता. Sir, my question is about you are from automobile sector. So like there's a Tesla, sir, they have entered into the EVs market, they have taken the first mover advantage. And sir, now the recession has came in the US market. And sir, we can see that there's a Tesla share is discounted at rate of 60%. And Elon Musk also has sold his stock in the Tesla. So what, how do you see the future of the Tesla? This is something out of what we are discussing. In any case, Tesla will remain there. Sir, because economy is going down, Tesla is coming down, the entire economy, a lot of other things are coming down in the US as well. Because Tesla is a first mover, you said yourself. So they're very good cars. And obviously, they will go in the future as well. Sir, because Elon Musk has signed his stock, stake, so that's why I'm saying that he believes in his company. I said Elon Musk is the biggest, मेरे हिसाब से उससे बड़ा entrepreneur नहीं आज की डेट में. ये अबानी दे लो, टाटा देखो, इनकी वर्थ देख लो, एलन मस्क की वर्थ देख लो. He bought Twitter, मिनटों में उसने लिया 40 billion. So Elon Musk is a smart guy. He went out, उसकी अपनी वर्थ तो maintained है ना. टेस्ला कंपनी की जो भी है करंट शेयर होल्डर्स हैं वो भी सफर नहीं करेंगे. टाइम्स टू कम अगेन दे विल गो. बट ही हैज वेंट आउट, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ वर्क. उसने अपना स्पेसक्राफ्ट वाली कंपनी बनाई है, इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी देयर, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी फोल्ड. So Elon Musk को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे.
Company will go down, the statutory ऊपर नीचे चलता रहता है, there's a part of business. फिर एक लास्ट फिगर से क्वेश्चन ले नहीं, लेंगे, नहीं, another नहीं, speaker is also waiting. Sir, I want to ask about, you are from real estate also, housing project. I'm not real estate, I had got some land, तो उसमें कुछ हो नहीं रहा था, तो we thought कि घर बनाते हैं. No, so we are just about to launch the papers, अभी तैयार सब तैयार हो गए. Good afternoon, sir. Sir, we have all heard that business is like a child for a founder. I want to ask that, are you happy with your child and what is your vision to your child? Obviously, I'm happy. I during my session I said कि you should do and you always grow in what you love in doing. So now I love automobiles. I love what I am doing. So we are here, and I love obviously that thing. And vision in future. Now I am just. I told you I'm working on a project, which I want to take it to all India. Whatever I'm doing into regional level. So just putting all my focus on that, looking for that thing. So and the goal, आप क्या सोच चुके हो? And the goal होता है just consolidating also कि हर तरफ इतना वो मत करो. I got a lot of opportunities हर दिन आती है, but I will never go to that. So ultimately, I will consolidate. Obviously, I'll work in the last day of my life, but I want to put more time. Like अभी सबके साथ मैंने ये भी बोला कि we have to put hard work and everything towards our business, but we have to maintain our family and other relations also along with that. So my aim is just I just want to keep on working that thing. But now I've stopped taking more new ventures with all that. Just focusing on one thing. उसके बाद क्या होगा you can't say. Right, next. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing such an impactful and inspiring talk. So to sum it up, you can Google for a person, you can Google for a personality, you can Google for an answer, you can Google a place, but you cannot Google what's in your heart. So always follow your thoughts, always talk to yourself and introspect. And with this, I now invite Khurana sir to please come forward and share his words with the students. Good afternoon, everyone. Before I start, I would like to thank God for this beautiful and successful journey we have. And being an alumni of the SD College, I feel honored to be in front of the current college students, their team, and our old SD alumni members. थोड़ी सी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए दोबारा बताना चाहूंगा. I am a Mahendra Khurana, Managing Director of Sundar Group, which consists of Sundar Jewelers, Sundar Sterling, and Sundar Emporium. I am a son of an ex-serviceman who started business with zero investment, not even a single penny. And he was doing it by the name of Sundar Embroidery. He was doing the business of embroidery and stitching. Then we entered into the business of Sundar Emporium. In 2003, we started the business by the name Sundar Jewelers. By the team of only 4 members, including me. At that time, I was the salesperson. I am the computer operator. I was the only in front of every customer. And with the 3 other members who were helping us. Now we have a team of approximately more than 200 members who are directly involved in day-to-day activities of Sundar Group, and about 150 family members who are indirectly connected with the Sundar Group. So you can say there are about 350 members who are directly or indirectly involved in this Sundar Group family. And we thank to this SD college
हु गेव अस, हमें जो इन्होंने जैसे अभी बताया गया था भाई, एक किसी डिसिप्लिन भी बात करते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन अगर हम अपनी बात करें उस समय के अंदर, आज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने उस समय के अंदर नॉट इवन सिंगल क्लास भी बंक नहीं की थी उस समय एक छोटी सी यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी, और जैसे बता रहे हैं वहाँ यूएमटी भी हुआ करता था। हमने क्लासेस जो है वो यूएमटी के अंदर छोटी सी कैंटीन हुआ करती थी, उसके अंदर हमने वो टाइम देखा हुआ है हमने। और थैंक्स टू अवर ओल्ड प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर केडी, प्रोफेसर सानी, प्रोफेसर अशोक महाजन जी, और मैं कभी और नाम भूल भी रहा हूँ, वो सब रिटायर हो चुके हैं। बट अगर मैं कुछ एक बात याद आ रही है, जैसे प्रोफेसर अगर केडी की बात करूं मैं, किरण दत्त जी की, उनके टाइम के अंदर हमारे एक उस क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। पिन ड्रॉप मीन्स पिन ड्रॉप। उसका रीजन है कि हमारे वो इतना पोलाइटली और सॉफ्टली बोला करते थे, आज वो हमें मिलते हैं तो इतना पोलाइटली सॉफ्टली बोलते हैं कि जब तक हमारे पास पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा तो वो हम सुन नहीं पाएंगे, उसको सुन नहीं सकते थे। तो आज भी हम उनको जो डिसिप्लिन हमें सिखाया गया है उसके लिए हम उनका बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। तो अभी बात चल रही थी, जैसे बात पूछ रहे थे क्या हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो एज पर मी, इन माय डिक्शनरी देयर इज नथिंग इन वर्ड इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल से दैट आई एम पॉसिबल। इसके लिए एक बेसिक जो पॉइंट है वो आपके अंदर करेज, दैट शुड बी मस्ट। अब हम कोई भी कुछ नया काम करने जा रहे हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर होता है, हमारे डर होता है, बट वी हैव टू कनकर दैट फियर। हमें वो डर को निकालना है, हमें अंदर एक हिडन हीरो जो है उसको बाहर निकालना है, और विद दैट करेज, विद दैट सेल्फ डिसिप्लिन एंड टू डू द स्पिरिट, भी हम कुछ काम कर सकते हैं, टू डू दैट स्पिरिट। हेलो Ganesh, हेलो हेलो हेलो। So we can say that we can do that spirit। तो वो हम कुछ भी एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं। बट कभी भी कुछ भी जैसे बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हम कहेंगे कि नियत और नियति, दो चीज आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी। आपकी एक नियत क्या है उस काम के अंदर, और नीति यानी कि पॉलिसीज। आपकी पॉलिसीज अगर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल माइंड क्लियर है, तो आपको मैं कहता हूँ बढ़ने से कोई पहले आगे नहीं रोक सकता। हमारे टाइम के अंदर ऐसी जो कोई क्लासेस हुआ करती थी, जैसे बताया सेमिनार्स हुआ करते थे, तो हमने जो कुछ भी सीखा है अपने सेल्फ डिसिप्लिन से सीखा है, उसी से आगे बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। आप कुछ भी सोच सकते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। लोग कहते हैं स्काई इज योर लिमिट, बट मेरे ये सोचना है स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि आज लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। बट तुम्हारी सोच क्या है, तुम कहां तक सोच सकते हो, वहां तक तुम पहुंच सकते हो। तो बाकी अभी बात कर रहे थे, अभी किस्मत के बारे में बात कर रहे थे, किस्मत कैसी होती है। मेरा ये मानना है किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि मेहनत का नशा करके देखिए, बीमारी आपको सफलता की लगेगी। तो अगर मेहनत करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो वैसे ही जैसे मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, कहते हैं यूं ही नहीं मिलती मंजिलें यकीनन, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है हार तब होती है जब मान ली जाती है, और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। आज मैं थोड़ा सा गला में खराब और कई लोग ने आपस में ये सुनने में आया है, कहते भी पैसे सब कुछ नहीं होता। पर ये मेरा मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। और अभी रंजीत जी कह रहे थे हमें पैसे कमाने के साथ ना कहीं बैलेंस भी हमें रखना पड़ेगा लाइफ के अंदर। हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो लाइफ के अंदर अगर पैसा भी चाहिए और वक्त भी चाहिए, बिकॉज द मनी, यू कैन से द मनी विदाउट द टाइम दैट इज वर्थलेस, एंड द टाइम विदाउट द मनी दैट इज पॉइंटलेस। तो दोनों में एक बैलेंस हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब जब भी काम करें तो उसके अंदर एक बैलेंस बना के रखें कि कैसे हम अपने आप को सोच सकते हैं। इसलिए मेरी एक थ्योरी है, वर्क लाइक ए कुली, लिव लाइक ए किंग। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं ऐसी समझता हूँ
आपको कोई कहीं रोक सकता है, दिल में जुनून जगाना पड़ेगा, क्योंकि आज जब किसी की भी पॉलिसीज या किसी के भी सिस्टम को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो जुनून है वो आप कॉपी नहीं कर सकते किसी का, वो आप खुद जगाना पड़ेगा आपके ऊपर अंदर। यही वजह आज मेहनत के लिए एक भगवान ने भी हाथ में हथेलियों में लकीरों से पहले उंगलियां बनाई हैं, भी आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे भी कहा था, कर्म करते चलो, फ्यूचर की मत सोचो, फल अपने आप खुद मिलेगा। और मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई एक आधा मेंबर अगले 10 साल के अंदर हमारे साथ यहाँ पर खड़ा होगा, जो एसडी कॉलोनी को ला के उनको यहाँ पर प्रमोट करेगा। थैंक यू। I'd say one thing to you. It's a suggestion. There's a book called Jugaad. 3 copies of this book are lying in the main library. I spotted this book on railway bookstore. And then I purchased for for myself and 3 for the college. This is a book containing case study of very successful entrepreneurs. One of these is Bharti Airtel. He didn't have money. He went to the banks. Bank said, for that big project, we can't do it. Then what he did? He divided his company into 5 smaller companies. And each company went to a different bank and they got the loan and went start. Similarly, a man from Rajasthan, he set up a factory, but the electricity was not available. Fluctuating, sometimes they were there, they were not there. Then he decided, what can I do? Then he read a book published from USA about air energy. So he set up windmills in the empty area, vacant area. To those windmills, he started producing so much electricity that the Gujarat Electricity Board wanted electricity from him. So these type of case studies, successful case studies, are in that book called Jugaad. There are so many other things also. You read that book, that's quite motivational and inspirational also. Thank you, sir. Any questions from all of you? मैंने सर डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। सर जैसे सर डीबर्स का वो है मोनोपोली है, 90+ मार्केट कैप्चर डीबर्स में करा हुआ है डायमंड की फील्ड में। तो सर उसने आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बना रखी है डायमंड्स की, बट डायमंड अबंडेंट में अवेलेबल है, तो सर उसकी वैल्यू फिर भी गोल्ड से ज्यादा है। तो सर रीजन कैसे है उसका, मतलब कि क्यों ऐसा होता है? सर वो आजकल आर्टिफिशियल डायमंड भी बन जाते हैं लैब्स में, तो फिर भी डायमंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोग उसको बहुत प्रीशियस मेटल मानते हैं, कमोडिटी मानते हैं। आज हम जिस डायमंड की बात करें, जिसकी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डायमंड्स। आप एक लैब ग्रोन डायमंड कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स आज के मार्केट के अंदर, उसमें क्या है अभी, उसमें आपने खुद एक प्रोड्यूस किया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज वहां से लेकर आपने उसकी मैच करके एक खुद लैब ग्रोन बनाया है, उसकी क्वांटिटी आज मार्केट में अवेलेबल है, उसका प्राइस आज भी डिफरेंट है। नेचुरल जो है वो नेचुरल ये ग्रोन होता है, वो गॉड गिफ्ट है, रफ शेप में आता है, उसके बाद में कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है। दैट इज अ रेयर स्टोन, और आज भी रेयर स्टोन है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच कॉस्टली। अगर आप कंपैरिजन करेंगे रेयर डायमंड की, नेचुरल डायमंड की और आर्टिफिशियल डायमंड की, लैब ग्रोन डायमंड की, देयर इज ऑलवेज देयर। क्योंकि रियल के बात कर रहे हैं, जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड की रिप्लेसमेंट बहुत आ चुकी है मार्केट के अंदर। जब पहले जैसे पूरा कहते हैं पीतल भी होता था और येलो मेटल्स आते हैं, लेकिन गोल्ड आज भी प्रेशियस है। उसका रीजन है वो आज नेचुरल चीज आइटम है, जो नेचुरल है उसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। लैब ग्रोन को नेचुरल से कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसकी स्केर्सिटी है, तो फैक्ट है इस बात का। नेचुरल डायमंड्स भी होते हैं, उनकी नेक्स्ट डे अगर हम आज परचेज करते हैं, नेक्स्ट डे वैल्यू 50% कट हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू कहलाती है, एक रेपर कोड आती है,
उसके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसका डेली रेट फ्लक्चुएट होता है, जैसे गोल्ड का फ्लक्चुएट होता है, उसकी एक वीकली रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आती है, आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा डेप्रिशिएट कभी नहीं होता, उसकी अप्रिशिएट हुई है। अगर मैं बात करूं, जब हमने काम स्टार्ट किया था 2003 के अंदर, और आज मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रेट हो चुका है उसका प्राइस का, तो अप्रिशिएट हुआ है, कहीं पर डाउन नहीं आया अभी तक प्राइस का। उसके लिए देखो, आज तक हमारा जो बिजनेस चलता रहा है वो पेट पे चलता रहा है। मतलब हम क्यों जाते थे, हमारे फादर जाते थे, फादर के फादर जाते थे, उसका लॉजिक नहीं था। लेकिन आज हर काम के लिए प्रैक्टिकल आ गया है। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे हम 2003 में एंटर हुए हैं, तो जब हमने बताया वी आर टीम ऑफ ओनली 4 मेंबर्स, तो हमें मार्केट के अंदर इतने अच्छे मार्केट compete करके इस लेवल पे आना बहुत मुश्किल टफ काम था। अगर हम उसी थ्योरी पे चलते भी, हमारे फोर फादर जाते थे, तो पुराने जो ज्वेलर्स थे वो था सक्सेसफुल होते रहता था वही, बट हुआ उल्टा, का प्रैक्टिकल होना पड़ा। जैसे आप पूछ रहे हैं भी नेचुरल परचेज करने में क्या करना चाहिए, जैसे हम गोल्ड की बात करें उसमें हॉलमार्क स्टैंडर्ड्स आते हैं, ऐसे डायमंड के अंदर भी सर्टिफिकेशन आती है। अब उसके अंदर वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेशन है, लाइक IGI है, JIA है, DGLA है, मतलब वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर हर डायमंड के ऊपर इंग्रेव किया जाता है एक यूनिक नंबर, यूनिक ID नंबर। उसको आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल वैल्यू है, और इंटरनेशनल वैल्यू उसकी मेंटेन रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। Thank you, sir. Thank you very much for sharing insights from your entrepreneurial journey. एक क्वेश्चन और। Yes. गुड आफ्टरनून सर। वो चलता है बेटा, अब चला दिया था। सर मेरा क्वेश्चन ज्वेलरी बिजनेस ऑल टुगेदर से है, क्योंकि जो जैसे मतलब ज्वेलरी या गोल्ड है, जो ऐसे आइटम्स हैं वो हम एज ए इन्वेस्टमेंट उसको परचेज करते हैं। तो पुराने टाइम पे तो हमारे पास जैसे फिजिकल डायमंड या फिजिकल गोल्ड होता था, तो ज्वेलर्स का बिजनेस अच्छा चलता था। बट अभी डिजिटल गोल्ड या ऐसी चीजें आ रही हैं, और वो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने या उन सभी ने उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया है। तो आने वाले 50 ईयर्स में, 100 ईयर्स में जो फिजिकल ज्वेलर्स बैठे हैं, चाहे वो आपका सुंदर ग्रुप हो या और भी जितने ग्रुप्स हैं, तो वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, या मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि चेंज आ रहा है बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में? अगर हम इसकी बात करें तो फिजिकल गोल्ड बंद नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है, आज इकोनॉमी अगर चल रही है तो गोल्ड के ऊपर चल रही है। आज इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल बैंक भी जो है गोल्ड को एज ए रिजर्व रखता है। और दूसरी बात करें, एक स्त्री धन कहलाता है। अगर हम एज मेल मेंबर परचेज, जितनी भी आइटम हम परचेज करते हैं वो नॉर्मली 90% मेल मेंबर्स के नाम पे होती है। बट लेकिन एक गोल्ड एक ऐसी आइटम है जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लेडीज परचेज करती हैं। अगर आप किसी अपने घर के अंदर किसी लेडीज को एज ए मदर को या वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप परचेज कर रहे हैं चाहे लेडीज खुद परचेज कर रही है, दैट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट लेडी। तो ये इसी तरह कहलाता है, आप उसको वापस नहीं मांग सकते। तो इसके लिए इसका चार्म कभी भी कम नहीं होगा, डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। और आज के अंदर दूसरी बात है, इन्होंने कितनी ज्वेलरी अपनी वाइफ को मेरे वो भी बता दें बात। और एक और बता दें, जब आपको पता होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, इंडिया पाकिस्तान बना था, तो लोग जहां पर जो चीज सबकी थी वो वहीं पर छोड़ के आ गए थे। आज जो बचा सका है, जो वहां से वो ट्रांसफर यहाँ से वहां ले जा चुका है, वो सिर्फ गोल्ड को कैरी कर चुका है। तो गोल्ड का जो चार्म है, जो उसके अंदर पावर है उसको रखने की, जब उसको रखने की खुशी होती है, प्रैक्टिकल फिजिकल परफॉर्मेंस जब आप लेते हैं तो उसका चार्म अलग रहता है। तो इसका कोई भी चांस नहीं है कि ये डाउन आएगा, डे बाय डे इंक्रीज हो गया, दैट इज डैम श्योर। Thank you, sir. And with this, I wish to share the importance that India holds, being the youngest startup nation in the world, and which is paving a way for the new India, which is the youngest startup nation of the world. And there's a strong connection. There is a strong connection between the education system in India and the startup ecosystem that India now possesses. So in terms of the startup ecosystem, India is the third largest startup ecosystem in the world now. And also at the same time, we are also the third largest education system in the world, with 63,000 higher education institutes. And we are producing around 40 million graduates per year. So this highlights the need for us to rise as a startup nation, and so that we can rise as an economic power also very soon.
And with this, I also request Anirudh Joshi sir to please extend a token of gratitude to the Uja sir and Khurana sir. So, yes. Vikram, sir. No, man. Thank you, sir. And I request Ajay sir to please come forward and propose a vote of thanks. Ma'am, please. Hello. Good afternoon, one and all. It is indeed been a privilege for me to be present here amongst our distinguished alumni, our very own, and the students who are here inspiring to be something different than just acquiring the jobs after their graduation. Well, for me, it was a very, very interesting session. I have heard Ranjit talk about his journey earlier also, and there are a few highlights which never really go beyond our memory. When he says that he took up a job and then finally he decided to become first generation businessman. The terminology keeps changing, but the threats and the challenges never change. And let me say, it might just sound very old-fashioned when some of them, as examples, talk about hard work. This hard work is never obsolete in any kind of journey. For me, if I were in place of you as student, for me, a take-home message was very clear. Be honest to yourself, be persistent, be self-disciplined, be self-motivated. Now, these 3-4 terms would concisely carry everything that you need to have in order to become a successful entrepreneur. Well, we have exemplary people in front of you, the successful ones, not that the journey was without hurdles. And it was rightly pointed out that many a times, you'll have to neutralize other people's misdeeds, but that should not demotivate you. The point here is to stay persistent, to stay motivated, at the same time, do not let the fire out. And that has to come with lots of discipline in the background. I repeat, discipline and hard work may sound a very, very cliched kind of line, but they never are outdated. Boys and girls, please pick on these important points, take them home, keep them in your heart when you are trying to pursue your dreams. I very sincerely extend my gratitude to both our eminent speakers, and I'm equally grateful to the organizing team who keep on undertaking such tasks of holding these motivational talks. Thanks to Principal Sir, to Joshi Sir, and to special alumni. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. And as very well said by sir also and ma'am also, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. So please do keep that in mind. And with this, I now request the faculty members to join for a group photograph on stage, and also the members of SADAC. And I request the students to please exit the hall in a systematic manner. Thank you.